Hello student, in the last class I had discussed types of essential elements. Today I will be starting with the mechanism of mineral absorption. So let's start with it. Mechanism of absorption of elements. Now when isolated cells, tissues or plant organs, they are placed inside dilute mineral solution, now the two phases of the mineral absorption, they can be distinguished. तो बहुत सारे experiments perform करे गए हैं isolated cells को लेकर, टिश्यूज को लेकर, और जब इन सेल्स को हम डाइल्यूट मिनरल सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हैं, द टू फेजेस ऑफ द मिनरल एब्जॉर्प्शन दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज फेजेस. So when these structures they are placed in dilute mineral solution, the two phases of the mineral absorption which can be distinguished, that I will discuss here. Now let's see what happens in the first phase. फर्स्ट फेज के अंदर जो आयंस है वो सेल में आउटर स्पेस में एंटर करेंगे. यस, आयंस दे एंटर outer space of cell. Yes, अब outer space क्या रिप्रेजेंट करता है? Outer space के अंदर आएगा cell wall as well as the intercellular spaces. Ions enter cell wall and intercellular spaces. So it is very well known to all of you that the cell wall and intercellular spaces, they represents the non-living component. So you can simply say that this movement, this absorption which is shown by the ions, this is a apoplastic movement. ये जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट है, दिस इज अ फास्टर मूवमेंट. दिस इज अ फास्टर मूवमेंट एंड दिस इज अ passive absorption because energy is not required for this movement of ions, for this absorption of ions. It is a passive process where ATP is not required. Now let's see what will happen in the second phase. सेकेंड फेज के अंदर अब ये जो आयंस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद अब पहुंच जाएंगे इनर स्पेस ऑफ सेल के अंदर. यस, सो नाउ आयंस दे एंटर इनर स्पेस ऑफ सेल. तो इनर स्पेस के अंदर क्या आएगा? मीन्स नाउ द आयंस दे हैव एंटर्ड साइटोप्लाज्म. They have crossed the membrane of vacuole and now they have also entered the vacuole. So you can see here कि ये सेल है, सेल के अंदर ये मैंने बनाई है सेल वॉल and this one is plasma membrane. This one is cell wall and this one is प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सेकेंड फेज के अंदर अब क्या हुआ? सेल ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करा एंड दे हैव एंटर्ड द साइटोप्लाज्म. सम ऑफ द आयंस दे हैव आल्सो एंटर्ड द वैक्यूल. तो इट मींस अब जो आयंस की मूवमेंट हो रही है वो हो रही है लिविंग पार्ट ऑफ सेल के अंदर. दैट्स व्हाई यू कैन कॉल दिस मूवमेंट एज सिम्प्लास्टिक मूवमेंट. Now this movement, it is comparatively slower. It is comparatively slower and it's required ATP energy is required for this type of the movement. So you can say it is a active absorption. Right?
So now the two phases of mineral absorption, that is very much clear to all of you. अब mineral absorption के बाद देखेंगे अब ये जो minerals root ने absorb करे हैं, इनका translocation कैसे होगा? How the minerals absorbed by the root, they are transported to the shoot system of the plant. So now let's see how the translocation of solutes, mineral salts will occur. अब जो मिनरल एलिमेंट्स है इसको रूट ने एब्सॉर्ब कर लिया. अब इन मिनरल एलिमेंट्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होगा? फ्रॉम द रूट सिस्टम टू द शूट सिस्टम. नाउ द ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, इट अकर्स थ्रू द जाइलम. ये जो मूवमेंट है ये जाइलम के थ्रू होगी. जाइलम के अंदर जब वाटर का ट्रांसलोकेशन होगा, अलोंग विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर देयर इज ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स. एंड इट इज वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ यू दैट वाटर की ट्रांसलोकेशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल. And the same force, it is responsible here for the mineral salt translocation. So it means water के साथ साथ mineral salts का translocation होगा, and the force which is responsible for this, that is transpiration pull, right? ये जो ट्रांसलोकेशन है मिनरल सॉल्ट्स का, ये वाटर के साथ साथ होता है. दिस हैज बीन प्रूव्ड through the radioactive studies which has been performed for the xylem sap. अगर हम इन मिनरल एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव कर दें और जाइलम सैप को टेस्ट करें इस रेडियो एक्टिविटी के लिए, इट वॉज ऑब्जर्व दैट सम रेडियो एक्टिविटी इज देयर इन द जाइलम सैप विच क्लियरली प्रूव्स कि जो मिनरल एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट है वो जाइलम के थ्रू होगा, थ्रू द ट्रांसपिरेशन पुल. Now after the translocation of the solutes, now I will be starting with the last one very important topic in this chapter, that is nitrogen metabolism. So let's start with the nitrogen metabolism. After the carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent element present in the body of living organism. Now large amount of nitrogen, it is present in the atmosphere. Atmosphere के अंदर nitrogen present है in the gaseous state, that is N2, and the concentration which is present, amount which is present, that is 78% by volume. अब एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़ा नाइट्रोजन का पूल है, पर ये जो नाइट्रोजन है, दिस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट. प्लांट इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता है. एटमॉस्फेयर के बाद अब देखिए नाइट्रोजन और कहां पर प्रेजेंट है? नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल, बट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट, दैट इज लिमिटेड. Limited amount of nitrogen it is present in the soil. अब ये जो नाइट्रोजन है, it is absorbed by the plants as well as the nitrogen which is present in the soil. It is also utilized by the microorganisms. So means we can say both plants as well as microorganisms, they compete for the limited nitrogen in the soil. पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रोजन एक क्रिटिकल एलिमेंट है. Yes, this critical element, it is deficient in the soil, so means we can easily say nitrogen, it is a limiting element both in the natural and agriculture ecosystem.
Now to understand nitrogen metabolism, first I will give you a brief outline of nitrogen cycle. So let's start with this. Yes, so here I am forming the major pool. Yes, one of the major pool of nitrogen, that is atmosphere. This atmospheric nitrogen, it cannot be utilized by the plant directly. तो इसके लिए पहले ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट एंड दिस विल अकर थ्रू अ प्रोसेस विच इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, this atmospheric nitrogen, it is changed, it is converted into salts of nitrogen, and the salts of the nitrogen, it can be easily assimilated by the plant. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या करेंगे, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इसको कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म के अंदर, द फॉर्म विच कैन बी assimilated by the plant. Now the nitrogen fixation, it can be of several types. Nitrogen fixation, it can be done through the activity of microorganisms. Yes, it cannot done through the activity of microorganism. This is known as biological nitrogen fixation, right? The nitrogen fixation, it can also be industrial, then it can also be electrical. लाइटनिंग की वजह से, थंडरिंग की वजह से, इवन ड्यू टू द यूवी रेज, व्हाट हैपन्स, ये जो डाई नाइट्रोजन है, it joins with the oxygen, right? And after that there is formation of nitrogen oxides. ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, they join with the water, they react with the water, water के साथ react करेंगे, जिसकी वजह से बनेगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, which can easily release nitrate. और ये जो nitrate है, it can be easily absorbed by the plant. So you can see what is happening in the nitrogen fixation. The unusable form of nitrogen, it is converted into the usable form. तो जो form plant utilize नहीं कर सकता, उसको convert कर रहे हैं the form which can be utilized by the plant. अब ये जो मैं यहां पर दिखा रही हूं, दिस इज सॉइल नाइट्रोजन पूल. ये क्या दिखाया था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पूल. नाउ दिस इज सॉइल नाइट्रोजन पूल. जैसे मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्रेट के अंदर. And you please keep this in mind whenever there is biological nitrogen fixation. Yes, whenever the nitrogen it is fixed by the microorganism, the nitrogen it is always converted into the ammonia. Yes, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा ना. इन द सॉइल द अमोनिया कैन बी एडेड थ्रू सेवरल वेज.
जैसे एक अमोनिया ऐड कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू, और बहुत सारे तरीके से अमोनिया ऐड हो सकता है. बट लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज द फेट ऑफ द अमोनिया इन द सॉइल. ये जो अमोनिया है ये सॉइल के अंदर बहुत तरीके से ऐड हो सकता है, ठीक है. जैसे एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, एंड इट कैन ऑल्सो बी एडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन. नो व्हाट इज दिस अमोनिफिकेशन, वो यहां पर अभी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज द फेट ऑफ अमोनिया. अमोनिया इन द सॉइल, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट. From the nitrite there is formation of nitrate. So ammonia is oxidized to nitrite, nitrite is oxidized to the nitrate, and the nitrate, it can be easily absorbed by the plant. The conversion of the ammonia into the nitrate, this is known as nitrification. Yes, and you have to keep this in mind that the nitrification, it is performed by bacteria which are chemoautotrophs. So you know what are the chemoautotrophs? Which can synthesize their own food, and for synthesizing for their food, they are dependent upon the chemical energy instead of the light one. Now, ये जो nitrate है, it can be easily absorbed by the plant. So this nitrate, now it becomes अब प्लांट्स ने नाइट्रेट को एब्सॉर्ब कर लिए, तो प्लांट के अंदर अब देखिए नाइट्रेट का क्या फेट है. अब प्लांट ने ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से बनाने हैं अमाइनो एसिड्स. द अमाइनो एसिड दे इन टर्न रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. पर अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज अमोनिया. तो इट मीन्स जो नाइट्रेट प्लांट ने एब्सॉर्ब करा है वो दोबारा आप किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया के अंदर, राइट. सो इन द प्लांट नाउ द नाइट्रेट इट इज reduced to nitrite. Nitrite, it is converted into the ammonia, and this ammonia, it is converted into the ammonium ions, which can be easily utilized for the synthesis of amino acid by the plant. Now, this fate of nitrogen in the plant, it is known as nitrate assimilation. Right? Now the plants, they are eaten up by the animals. The plants and animals, when they will die, so now the nitrogen, it becomes the part of decaying organic matter, or you can say decaying biomass. अब डिकेइंग बायोमास के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज इन दी ऑर्गेनिक फॉर्म. ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट. द वन इज विच इज प्रेजेंट इन दी प्रोटीन्स. अब ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म, दैट इज अमोनिया. So organic form of nitrogen, it is converted into the inorganic form, that is ammonia, and the process which is involved here, that is ammonification. Right. Now what happens, ये जो यहाँ पर nitrate form हुआ है,
Now some of the nitrate, it is utilized by the plant, absorbed by the plant, and some of the nitrate, it is lost to the atmosphere in the form of the dinitrogen. Or you can say this nitrate, it is converted into the dinitrogen, and this process of the conversion of the nitrate into dinitrogen, it is known as denitrification. So the different steps which are involved in the nitrogen cycle, that is very much clear to all of you. तो इन सारे steps को हम quickly यहाँ पर discuss कर लेते हैं. Biological nitrogen fixation, atmospheric nitrogen is converted into the ammonia. अब soil के अंदर जो ammonia present है, it is converted into nitrite, nitrite into the nitrate through the process of nitrification. This is done by the chemoautotrophs. अब ये जो nitrate है, एक इसको plant absorb कर लेगा. Second, some of the nitrate, it is converted into the atmospheric nitrogen. This process, this conversion, it is known as denitrification. Again done by the microorganisms. अब प्लांट ने जो नाइट्रेट एब्जॉर्ब करा है, इस नाइट्रेट से क्या बनेगा? अमाइनो एसिड. सो द फेट ऑफ द नाइट्रोजन इनसाइड द प्लांट, दिस इज नोन एज नाइट्रेट एसिमिलेशन. Plants, they are eaten up by the animals. When the plants and animals, they will die, organic nitrogen, it is added in the soil. Organic nitrogen se banegi inorganic nitrogen, that is ammonia, and the process which is involved, that is ammonification. So you have to keep this in mind: biological nitrogen fixation, denitrification, nitrification, ammonification. ये जो चार steps है, they are performed by the microorganisms. And this step in the nitrogen cycle, that is nitrate assimilation, this step, it is occurring inside the plant. So this is the one which is occurring in the plant, and rest of the steps, they are performed by the microorganisms. अब इस पूरे स्टेप्स को हमने यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टार्टिंग विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिजम्स.